Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today we are going to discuss objective questions of Class 12 Sociology, Chapter 6, The Challenges of Cultural Diversity. First question. Power whose basis is the threat or application of punishment is called A. Charismatic authority, B. Traditional authority, C. Authority, D. Force. तो इसका सही आंसर है फोर्स. इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी पावर जिसके बेसिस एक थ्रेट या फिर एक एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट मींस जिसका एक तरह से हम बोल सकते हैं लोगों के लिए या फिर कोई भी कम्युनिटी के लिए एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट विच इज वेरी 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 हार्श यू कैन से. तो उसका जो मेन एक आप एप्लीकेशन बोल सकते हो तो वो एक फोर्स होगी, राइट. तो हम इसको फोर्स बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. अ स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी अकॉर्डिंग टू. तो ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? इज द राइट आंसर मार्क्स वेबर. थर्ड क्वेश्चन. यूनियन लिस्ट डैश आइटम्स. हमें फिलअप करना है इसे. तो यूनियन लिस्ट हैज 100 आइटम्स, स्टेट लिस्ट 61 एंड कॉन्करेंट लिस्ट 52, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. प्रिविलेज्ड मिनॉरिटीज such as extremely wealthy people are not usually referred to as minorities. So हमें इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये सही है या गलत. So it is very true. Extremely wealthy people minorities में कंसीडर नहीं किए जाते हैं. Question number 5. Article dash and dash are related to minority people. So article 29 and 30 are related to minority people. Question number 6. Each 5-year plan also involves detailed state plans prepared by the dash of each state. So the answer is state planning commissions. यहाँ पर space नहीं है, right. So each 5-year plan also involves detailed state plans prepared by the state planning commissions of each state. 7th. In India, nationalism, the dominant trend, was marked by an dash and dash vision. So इसका आंसर है inclusive and democratic, right. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सारी सर्विसेज को इंक्लूड करना, राइट. सो इट वाज मार्क्ड बाय इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक विजन. क्वेश्चन नंबर 8. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म इज इट्स क्लेम दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स. सो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स. सो इट इज वेरी ट्रू. क्वेश्चन नंबर 9. And dash state is the opposite of democratic state. So the answer is authoritarian. AUTHORITA, authoritarian. Right. So authoritarian state is the opposite of democratic state. ठीक है. Question number 10. Under dash act of dash, any person may request information from a public authority, right. अब यहाँ public authority means जो government undertaking है which is expected to reply in 30 days of time frame. So it is right to information act, right to information, RTI, act of 2005. So इस एक्ट के अंडर कोई भी पर्सन रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, राइट. हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, राइट. एंड इंफॉर्मेशन किसके रिगार्ड? सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है, सो उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ,
and all the information regarding that वो सभी provide करना government का काम है, and that is a right of a person under this Right to Information Act of 2005, and the information जो आप information मांगेंगे that has to be given within a time frame of 30 days, right? So this is RTI Act of 2005. So guys, if you want some other questions also and the PDF of these questions, please let me know in the comment section. For the time, please like my video, please subscribe Passion Studies, and do share this video with your friends.